So hey guys, hi, welcome to HR with Sanchita. So today the topic is models of organizational behavior. Okay, so yes, before I start with the topic, subscribe to my channel so that you keep on getting updates. And in the community section also, I keep on posting updates that what I would be doing and what are the new things that I'm coming up with. And yes, again I keep on telling you that join my Telegram channel also, HR with Sanchita, which is really important to join if you want to stay connected with me and whatever I'm doing on whatever platforms I'm taking my classes. Okay, so this it is with the same name, HR with Sanchita, and I'll just pin the link in the comments also. In the comment section you can go and just join that channel. Okay, and in future if I want to conduct some quizzes and I want to give you some updates, so I'll be giving on that channel only. So let the notification come for the next UGC net, and then we'll have quizzes also. Whatever topics we do, I'll just take quizzes and I'll just discuss some important PYQs and all. Okay, and yes, this is also important for the MBA students also, because they have their these all things in that. Okay, now let's start. So first is the autocratic model. So now you can understand from its meaning itself that what would be autocratic model of OB. So let's read first of all that what are the pointers that are given. So autocratic model is the model that depends upon strength, power and formal authority. तो यहाँ पे ये जो मॉडल है किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ पे, पावर पे एंड फॉर्मल अथॉरिटी पे. The employees in this model are oriented towards obedience and discipline. मतलब obedience और discipline यहाँ की main चीजें. The employee should be obedient, the employee should be disciplined, and there is formal authority. ठीक है, तो बॉस का यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल होता है. ठीक है, जो बॉस बोलेगा वही करना पड़ता है. ठीक है, all the power lies with the boss. Okay, so the employees are dependent on their boss. In an autocratic organization, the people who manage the task in an organization have formal authority for controlling the employees who work under them. तो ये बोल रहा है कि भाई मैनेजमेंट एंड ओनर्स के पास अथॉरिटी होती है. ओके, पूरी अथॉरिटी होती है, और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके नीचे जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना पड़ता है मैनेजमेंट या ओनर्स को. ठीक है, सो हियर the power lies with the management and owners, and the employees have to follow the management and the owners. ठीक है, so the management and owners have the controlling power of the employees. Okay, so this is there in the autocratic model. Now let's see some more pointers of the autocratic model. These lower level employees have little control over the work function. As I told you कि ज्यादा पावर किसके पास होगी? जो ओनर्स है, जो मैनेजमेंट है, उसके पास ज्यादा पावर होगी. ठीक है, नाउ और जो उनके अंडर काम करेंगे, they would have little control, they would have less power. Okay, their ideas and innovations are not generally welcomed as the key decisions are made at the top management. Now as I told you that the management and owners have the main controlling authority, they have the main power. So obviously, okay, जो भी employees जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, if they'll give some ideas or if they'll give some innovative ideas, so that won't be considered. Okay, that won't be welcomed, because here the ultimate power lies with the top management. The guiding principle behind this model is that management owners have enormous business expertise and the average employees relatively. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ what is written in the last para, that यहाँ पे क्या ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंदर इट इज देयर कि जो टॉप मैनेजमेंट है ना, उनके पास ही एक्सपर्टीज होती है किसी भी चीज की. दे आर हैविंग बिजनेस एक्सपर्टीज, दे नो हाउ टू रन द बिजनेस, दे आर हैविंग इमेंस नॉलेज. ओके, और जो उनके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके पास कम स्किल्स होती हैं, तो वो बिजनेस डिसीजंस नहीं ले सकते. सो दिस इज व्हाट दिस ऑटोक्रेटिक मॉडल बिलीव्स. अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मॉडल, कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, so they are experts. Okay, they are experts in taking decisions related to the field of business. They are having immense knowledge. Okay, and the people working at the lower levels, okay, they are having very less knowledge, very less skills. Okay, very low level of skills. Okay, which are required to take the decisions. So that is why the power lies with the management and owners. That is why the power lies with the top level management. So I hope it is clear. So the autocratic model is also a detractor of job satisfaction and employee morale. तो एक बात बताइए,
अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो और वहां पे ऑटोक्रेटिक मॉडल फॉलो होता हो, ओके, एंड यू हैव जस्ट जॉइंड एट अ लो लेवल, ओके, तो बताइए, तो आप क्या सेटिस्फाइड रहेंगे उस जॉब से? Okay, where you have to follow, you're not allowed to give your views related to anything, okay, you just have to follow your seniors, so then it would reduce the job satisfaction, right? और मोरल भी आपका रिड्यूस करेगा. You won't feel a sense of belongingness towards that organization if the autocratic model would be there. Okay, so that is why it is called a detractor to job satisfaction and employee morale, because you would be satisfied working in such an organization, and the morale that you'll have would also decrease or would also be low. Okay, so this is because employees do not feel valued and part of the overall team. अब क्यों? क्यों? आपको लगेगा ही नहीं आपकी वैल्यू हो रही है. When your things are not entertained, when your views are not entertained, you don't have any say in the decision making process. You just have to follow your top level management, or you just have to follow the owners of the enterprise, right? So this leads to a low level of work performance. So as a result, if you won't feel valued and you won't feel part of the team, you won't feel that you are part of the organization. You will just feel that you're just working here and you're getting paid, nothing else. Okay, you don't have any sense of belongingness towards the organization. So अब इस वजह से क्या होता है, दिस लीड्स टू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क परफॉर्मेंस. तो ये सब चीजें जब होती हैं, व्हेन योर जॉब सेटिस्फैक्शन इज लो, योर मोरल इज लो, योर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज लो, you are not feeling valued, so obviously that would affect your work performance. So it would lead to low level of work performance of the people working in such organizations which have an autocratic model. So while the autocratic model might be appropriate for some very automated factory situations, it has become outdated for most modern day organization. तो जो हमारी modern organizations हैं, ठीक है, so वहां पे ये ऐसा autocratic model नहीं चलेगा generally. Okay, because the modern organization require a lot of creativity, a lot of ideas that should flow in from different people, from different brains. Okay, so but this idea flow ये तो support नहीं करता है, राइट? ऑटोक्रेटिक मॉडल ये तो चाहता है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट करे जो करे, ओनर्स करे जो करे. सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ मॉडल इज नॉट सूटेबल फॉर द मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशंस. वेयर एज जहाँ पे बिल्कुल प्लान, जहाँ पे बिल्कुल ऑटोमेटेड तरीके से काम हो रहा है कि एक आप सोचो एक फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है कि बिस्किट है, बिस्किट के ऊपर पहली कवरिंग चलेगी, फिर दूसरी कवरिंग चलेगी, फिर डब्बे में रख दिया जाएगा. तो ऐसे ऑटोमेटेड चीजों में तो you can apply the autocratic model. But if you're talking about the modern day organizations wherein a lot of ideas are required, a lot of creativity is required, there it won't work. Okay, now let's come to the next model, that is custodial model. Now this has a little bit improvement from the autocratic model. Now let's read what is there in this model. The custodial model is based around the concept of providing economic security for employees through wages and other benefits that will create employee loyalty and motivation. तो custodial model क्या कहता है? So it is based on the concept of providing economic security for employees, कि अपने एम्प्लॉयज को इकोनॉमिक सिक्योरिटी दो, वेजेस के थ्रू बेनिफिट्स दो उनको. ओके, अब अगर आप वेजेस दोगे, बेनिफिट्स दोगे अच्छे, सो व्हाट विल इट डू इज इट विल क्रिएट एम्प्लॉय लॉयल्टी. ठीक है, अगर आप उन्हें कुछ बेनिफिट्स देंगे तो फिर ऑब्वियसली एम्प्लॉयज की लॉयल्टी आपकी तरफ बढ़ेगी, थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ेगा इफ यू प्रोवाइड देम बेनिफिट्स. सो इन सम कंट्रीज मेनी प्रोफेशनल कंपनीज प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट कार्ड्स एंड सो ऑन. दीज आर इंसेंटिव्स डिजाइन्ड टू अट्रैक्ट एंड रिटेन क्वालिटी स्टाफ. तो देखो आप अगर कस्टोडियल मॉडल में आप एज अ कस्टोडियन, ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग एज अ कस्टोडियन, ठीक है, तो what it is giving additional benefits, okay, to the people who are working in it, ठीक है, who are working in the company. तो इससे क्या होता है, if you give some benefits then you will get loyalty of the workers and the motivation would also increase. For example, in some countries आपको corporate cars दी जाती हैं, आपको health benefits दिए जाते हैं, तो फिर then you feel भाई your organization is caring about you, it's giving you some extra benefits, it's giving you some incentives. Okay, so what it does is it attracts staff and retains quality staff. एक तो बाहर से, और आप सोचो कि अगर आपकी कंपनी आपको कार दे रही है, कुछ हाउसिंग फैसिलिटी दे रही है,
subsidized rates पे, तो then the people who are working in other companies would also get attracted. अगर आप किसी ऐसे person से मिलेंगे कि जो उस कंपनी में काम कर रहा हो, वो बोलेगा यार मुझे तो हाउसिंग फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, मुझे जहाँ पे 35,000 देने पड़ते थे वहाँ पे मुझे सिर्फ 5-6,000 देना पड़ता है, ओके, देन द अदर पर्सन वुड ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड, यार मैं भी वहाँ अप्लाई करता हूँ, वाई, मैं भी बहुत ज्यादा रेंट पे कर रहा हूँ, वाई शुड आई पे दैट, राइट। या अगर किसी ने कार फैसिलिटी दी हुई है तो भी लोग अट्रैक्ट होंगे, राइट, और कुछ अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ बेनिफिट्स दिए हैं तो भी लोग अट्रैक्ट होंगे, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो तो रिटेन होंगे ही होंगे, and the other people would also be attracted in the market to work in that particular organization. So this is the starting of the custodial model. Now let's read some other pointers also. The underlying theory for the organization is that they will have a greater skilled workforce, more motivated employees, and have a competitive advantage through employee knowledge and expertise. अब ऐसे क्या होगा, ठीक है, what will happen is you'll have a greater skilled workforce, you'll have motivated employees. आपको बाहर से भी अच्छे अच्छे employees आपके organization में आएंगे, ठीक है, and that would give you a competitive advantage over other. अगर आप ऐसे benefits देंगे, you will be at a competitive advantage, okay, over the other competitor firms, because आप कुछ अलग कर रहे होंगे, okay, and you'll get new good employees in your organization also, and as well as you would retain the talent and knowledge of the existing people. They won't leave you easily, okay. So this is there in the custodial model. Now let's read one more point related to the custodial model. One of the downsides, now let's we understood that what are the positives, okay, what are the pros of the custodial model. Now let's understand what is the downside or what is the negative side that the custodial model has. Now you can see one of the downsides with the custodial model is that it also attracts and retains low performance staff as well, or perhaps even deliver a lower level of motivation from some staff who feel that they are trapped in an organization because the benefits are too good to leave. अब देखो, वो तो जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए, सो दैट वाज द पॉजिटिव साइड. अब नेगेटिव साइड क्या है कि आपके, अब जरूरी थोड़ी है कि पूरी कंपनी में सारे एक जैसे ही होंगे, बहुत हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज ही होंगे, एवरेज भी होते हैं, कई लो परफॉर्मिंग भी होते हैं. जैसे व्हेन यू वर इन योर क्लास देयर वर सम टॉप परफॉर्मिंग पीपल, देन देयर वर सम पीपल हु वर गेटिंग 95 above, some were lying between 80 to 90, and some were in 60s to 70s, and there were some people who were there in 40 to 50s, and one or two used to fail also. Okay, so वैसे ही in an organization also the same situation is there. Okay, there is some low performing staff as well. अब ये low performing staff को तो लगेगा कि यार हमें कहीं और तो मिलेगी भी नहीं, और हम क्यों छोड़े ये organization, ठीक है, यहाँ पे इतने अच्छे benefits मिल रहे हैं. Some people would feel that why to leave यार, ठीक है. अब आपको पता है कई कंपनीज जैसे लो परफॉर्मिंग स्टाफ को चाहती हैं, वो निकालती तो नहीं है, बट दे वांट दैट दे शुड लीव, कि ये भाई चेंज करते रहें, तो वो सोचते हैं कि हाँ ये चेंज कर लेंगे, ओके. बट इफ यू गिव सच बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सो व्हाट्स द डाउन साइड ऑफ दिस मॉडल. आप बताइए डाउन साइड इसकी क्या होगी, इसकी नेगेटिव क्या होगी, कि आपके जो लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज हैं वो ना अट्रैक्टेड रहेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, दे वोंट लीव, ओके, योर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे आर गेटिंग सो मच गुड बेनिफिट्स, ओके. और कुछ स्टाफ की मोटिवेशन भी लो हो सकती है. क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो ट्रैप्ड हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर ट्रैप्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे हैं उन्हें लगता है कि यार दे आर टू गुड टू लीव, कि नहीं यार दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाना तो चाहता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे घर मिला हुआ है, यहाँ गाड़ी मिली है, अब ये घर और गाड़ी को कौन छोड़ेगा, ठीक है. तो उनकी मोटिवेशन ना उस लेवल से भी लो हो जाती है, बिकॉज दे वुड फील ट्रैप्ड. उन्हें और जगह भी उन्हें लग रहा हो कि द अपॉर्चुनिटी, उनको जो दूसरी कंपनीज में ज्यादा लर्निंग भी हो सकती है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, बट उन्हें लगेगा बट मेरे को ये चीज देखनी है कि यार घर जब इतने सस्ते में मिल रहा है 5,000 में, नहीं तो अगर मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, मुझे अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, मुझे ये हेल्थ बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे, तो इसीलिए वो फिर ट्रैप्ड फील करते हैं. They don't want to leave because the benefits are too good. So this is the downside of the custodial model. Now let's come to the supportive model. अब देखो यहाँ पे you can see one word that I've highlighted in the first line, that is aspiring leadership, motivation. Okay, थर्ड लाइन में मोटिवेशन, आप देख रहे हो मोटिवेशन ये सब बहुत यूज हो रहा है, ठीक है. If you see the black highlighted things. Now let's read what is it. Supportive model. Unlike the two earlier approaches, the supportive model is focused around aspiring leadership.
It is not based upon control and authority. अब ये जो हमारा supportive model है, it is not based on control and authority. Now if I ask you which model is based on control and authority, which OB model is based on control and authority, so your answer would be autocratic model, right? And if I would ask you which model is based upon incentives, where you were providing incentives, car, health benefits, and housing facility, so you were providing it in the custodial model. So on exam question can come. So on control and authority, autocratic model, incentives, custodial model. But what is supportive model based on? It instead tries to motivate staff through the manager-employee relationship and how employees are treated on day-to-day basis. तो यहाँ पे क्या होता है? You try to motivate your staff. ठीक है, यू ट्राई टू मोटिवेट योर स्टाफ. और कैसे आप मैनेजर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अच्छा करते हैं, अच्छा लीडरशिप टेक्निक यूज करते हैं. ओके, एंड यू ट्रीट योर एम्प्लॉयज गुड ऑन डे टू डे बेसिस. आप रोज उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं. यू ट्राई टू मोटिवेट देम. Quite opposite to the autocratic model, this approach states that employees are self-motivated and have value and insight to contribute to the organization beyond just their day-to-day role. तो आप यहाँ पे क्या बिलीव करते हैं? What do you believe in the supportive model? You believe that employees are self-motivated. Okay, employees self-motivated रहते हैं and उनके पास भी insight होता है. They also have value and insight to contribute. Employees की value होती है and they have some valuable things that they can contribute. They have some valuable knowledge. They have some valuable ideas that they can contribute to the organization. Okay, वो day to day role तो कर ही रहे हैं, जो वो रोज करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, but इसके साथ साथ they have the capacity and they have the capability to give ideas, okay, and to give some insight about the organization, give new ideas. Okay, the intent of this model is to motivate employees through a positive workplace where the ideas are encouraged and often adapted. So this is what we were talking in the last discussion, in the last line. So अब यहाँ पे इस मॉडल का इंटेंट क्या है, क्या पर्पस है? To motivate employees. कैसे? Through a positive workplace where their ideas are encouraged. ठीक है, आप मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को कैसे? एक पॉजिटिव वर्कप्लेस, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करके जहाँ पे उनके आइडियाज एंटरटेन हो रहे हैं. ठीक है, and they are encouraged to give new ideas. उनको बोला जाता है भाई give new ideas, tell us something, give your views, what are your views on this, what are your suggestions. और फिर अगर वो suggestions अच्छी लगे उन्हें adapt भी किया जाता है. Okay, so this is the intent or this is the motive of this model. Now let's talk about the next model and the last model, that is the collegial model. Now अब पीछे वाला जो था that was based on motivation. Now the collegial model revolves around teamwork. So teamwork is the keyword to remember this model. The collegial model is based around a teamwork. Everybody working as colleagues. Okay, तो ये teamwork पे based है कि भाई आप टीम में अच्छे से काम करो, ग्रुप में अच्छे से काम करो. Okay, the overall environment and corporate culture need to be aligned to this model where everybody is actively participating. Is not about status and job titles. Everybody is encouraged to work together to build a better organization. तो यहाँ पे टीम में काम करो, actively participate करो. Okay, everyone should participate actively in the working of the organization and in giving ideas, and everybody is encouraged to work together. मतलब साथ मिलके काम करो and build a better organization. Okay, work together, work in team and build a better organization. Give your suggestions, work in team, build a better organization. The role of the manager is to foster this teamwork and create positive and energetic workplace. तो ये क्या है, मैनेजर का रोल क्या होता है कि भाई आप टीम वर्क को प्रमोट करो, टीम वर्क को बिल्ड करो, लोगों को कहो कि भाई टीम में काम करे और एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक वर्कप्लेस बिल्ड करो. So collegial model, remember, teamwork is the key component here. Okay, that you should work in teams. Now let's come to the last slide, and if you've understood everything, do press the like button and subscribe. Now in much regard the manager can be considered to be a coach of the team. तो यहाँ पे क्या होता है, टीम का कोच होता है ना, क्रिकेट टीम के भी कोच होते हैं, सारे स्पोर्ट्स के टीम के कोच होते हैं, तो वैसे ही मैनेजर इज कंसिडर्ड एज अ कोच ऑफ अ टीम. वो कोच करता है भाई आप अच्छे से परफॉर्म करिए, मिलजुल के काम कीजिए, टीम वर्क में काम कीजिए. एंड एज कोच द गोल इज टू मेक द टीम परफॉर्म वेल
overall rather than focus on their performance or the performance of key individual. तो ठीक है, हमें single key individuals पे ज्यादा फोकस नहीं करना है. वी हैव टू फोकस ऑन द टीम. ऐसे नहीं कि सिर्फ अपना अपना सोचें. सो वर्क एज अ टीम. ओके, द कॉलेजियल मॉडल इज क्वाइट इफेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशंस दैट नीड टू फाइंड न्यू अप्रोचेस, मार्केटिंग टीम्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा हो, जहाँ पे हमें नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी हो, जहाँ पे हमें नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने हो. ओके, सो देयर दिस कॉलेजियल मॉडल इज वेरी good, okay, if you want to apply it to such organizations where a lot of development, a lot of research, okay, is required. For example, in technology and software organizations, you need to keep on developing, you need to keep on discovering new technologies, you need to keep on launching new products, because आपके हर 6 महीने में obsolete होते जाते हैं. Be it phones, you've seen mobile phones, laptops, watches nowadays. Okay, so they keep on coming with new things. Even with headphones, earphones, they are coming with new technologies. Okay, so in such organizations, such collegial teams, collegial model of OB would be suitable. Okay, where teamwork is the main component. So I hope it is clear.